Students, this is Dr. Vishali Jain, your English teacher. So today we will be focusing on poem 3 of 11th class, which is prescribed in your book Hornbill, and the title of the poem is The Voice of the Rain, which is composed by a very great and well-known American poet, Walt Whitman. Let me tell you something about Walt Whitman first. So my dear students, Walt Whitman means he loved to write about the nature, and he also loved to show that how everything in the nature is connected to each other. So my dear students, first of all let's focus over the structure of the poem. So this poem is very short poem and it consists of 12 lines, but one point is that it is combined in only one stanza. So see, actually it is in the conversational tone, means there is a conversation between the poet and the rain. Yes, our poet Walt Whitman has used rain as a person who has voice, means as a human being. So there is personification. In other words, we can also say rain has been personified here. Now see, and who art thou, said I to the soft falling shower. So now poet says कि in starting two lines, this is the voice of the poet and other lines are the voice of the rain. Means first two lines में poet question पूछते हैं rain से, and in the rest of the poem rain is replying to the poet. So first line is, and who art thou, said I to the soft falling shower. Means poet कहते हैं कि आप, who are you, and I means in first line I means the poet Walt Whitman कि मैंने पूछा soft falling shower means इससे rain से. Here you can see the word meanings. Which strange to tell. Strange to tell means जब पोइट ने रेन से पूछा तो वो खुद भी बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि उनको ये बड़ा स्ट्रेंज लगा कि सामने से जो रेन थी उसने उनको रिप्लाई किया. विच गेव मी एन आंसर एंड हियर ट्रांसलेटेड. गेव मी मीन्स पोइट वॉल्ट विटमैन कि रेन ने पोइट को आंसर दिया, रिप्लाई किया, एंड हियर ट्रांसलेटेड. और अब हमें पोइट बताते हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया रेन ने. नाउ फ्रॉम द थर्ड लाइन, here is the voice of the rain. Listen carefully my dear students. I am the poem of the earth. So I am the poem of the earth. Here I means rain कहती है कि मैं अर्थ का सॉन्ग हूँ. Said the voice of the rain means कि जो रेन थी सामने से उसने रिप्लाई किया. Eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea. See my dear students, रेन कहती है कि impalpable means which cannot be touched and felt. रेन कहती है कि out of the bottomless sea and out of the land मैं water vapor के रूप में ऊपर आसमान में चली जाती हूँ. upward to heaven. heaven means sky. ऊपर आसमान की तरफ चली जाती हूँ. whence मतलब where. vaguely formed altogether changed and yet the same. so there is a paradox. See, रेन कहती है कि जहां पर जो रेन है उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, मींस क्लाउड क्लस्टर बन जाता है, एंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ वाटर इट कम्स बैक टू द अर्थ. सो कहती है कि वहां मैं कंप्लीटली चेंज हो जाती हूँ, बट फिर भी मैं सेम हूँ समवेयर और द अदर. नाउ सी द नेक्स्ट एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन. आई descend to the lave the drought atomies dust layers of the globe. globe means earth. poem means जो रेन है बहुत आर्टिस्टिकली, बहुत पोइटिकली कहती है कि मैं I come down again to wash. lave means wash the drought, जो सूखा पड़ा है यहाँ पर उसको. atomies means tiny particles, dust layer of the globe. और मतलब मैं दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए अर्थ को come down on the earth. it means कि देखिए जब बारिश होती है तो क्या होता है कि सब कुछ बहुत साफ हो जाता है,
हमें लगता है कि सब कुछ रिफ्रेश हो गया, रिलीव हो गया है दोबारा से, ऐसे बहुत सफाई हो जाती है। जो लीव्स हैं ट्रीज की वो भी हमें बहुत रिफ्रेशिंग लगती हैं, साफ ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, एवरीथिंग इज सो क्लियर अप. So and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And Rain is saying कि सीड्स के सॉइल के अंदर जो सीड्स हैं, अगर वहां पर पानी नहीं पहुंचता है और रेन इज नॉट, अगर रेन के रूप में पानी नहीं पहुंचता है तो वो क्या होता है, वहां पर जो वो सीड्स हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं, वो स्प्राउट नहीं हो पाते, ग्रो नहीं हो पाते और अनबॉर्न रह जाते हैं और हिडन रह जाते हैं वहीं पर. दैट वी नो कि अगर हम कोई सैपलिंग को प्लांट करते हैं तो उसको वाटर देना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट ग्रो. नाउ एंड फॉर एवर डे by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautified. See, कितना symbolically poet ने बोला है कि रेन कहती है कि टू माई ऑन ऑरिजिन. व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ द रेन? अर्थ, क्योंकि अर्थ से वाटर वेपर, जो हमारी वाटर साइकिल है, वाटर वेपर ऊपर हेवन या स्काई की तरफ जाती है, देन क्लाउड का क्लस्टर बनता है, देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इट कम्स बैक टू द अर्थ, देन अगेन सेम साइकिल गेट्स स्टार्ट. सो सेम इज हियर. रेन कहती है कि वो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली वो दोबारा से रिलीव करती है, रिफ्रेश करती है अपने बर्थ प्लेस को. ओरिजिन मीन्स बर्थ प्लेस एंड दैट इज द अर्थ. नाउ और इसको दोबारा से प्योरीफाई करती है, ब्यूटीफाई करती है, रिफ्रेश करती है एंड जस्ट एक्साइट, यहाँ पर वो पॉजिटिविटी बढ़ाती है. मीन्स वी नो ना कि जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें कैसे सबको इंजॉयमेंट करते हैं हम सब, कैसे पॉजिटिविटी आ जाती है, कैसे रिफ्रेश हो जाता है सारा हमारा surroundings. This and now at last, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrapped on unwrapped, duly with love returns. See my dear students, last two lines of the poem are in the bracket, right? Now see the logical point, and that is कि these lines are neither the voice of the poet nor the voice of the rain. Then this is the general observation that has been observed by the poet during the composition or of the song, right? So यहाँ पर poet कहते हैं कि जो हमारा song है और जो rain है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा like mature हैं. वो कैसे कि song और rain दोनों ही हमारा क्या करते हैं कि बर्थ प्लेस से उनका बर्थ होता है, फिर वाटर साइकिल के रूप में वापस आ जाती है, उसको फॉलो करती हुई हमारी रेन टू रिफ्रेश द अर्थ. इसी तरह से जो सॉन्ग है वो भी, मतलब रेन और सॉन्ग एक दूसरे को, मतलब दूसरों को केयर नहीं करते हैं, वेदर दे आर रैप्ड और अनरैप्ड. मीन्स चाहे कोई उनकी केयर करे या ना करे, दे डजंट गेट अफेक्टेड बाय देम. मीन्स कि जो सॉन्ग है, जो सॉन्ग जो हमारे प्रोड्यूसर है या सिंगर है, वो सॉन्ग लिखते समय या राइटर है सॉन्ग को लिखते समय या सिंगर सॉन्ग को सिंगिंग करते समय ये नहीं सोचते कि ये किसी को पसंद आएगा या नहीं आएगा, दे जस्ट एंजॉय इट. सिमिलरली जो पोम है वो भी इंजॉय करती है अपने आप को और एट लास्ट अगेन दे कम बैक टू देयर बर्थ प्लेस टू रिफ्रेश इट अगेन, राइट? So my dear students, let's focus over the rhyming scheme of the poem. So in this poem, what Whitman has used no pattern of rhyming scheme. It means there is a blank verse, means the last lines of the stanza don't rhyme with each other. And one more point is that, dear students, what Whitman is considered to be the father of the free verse, means he was the first poet who used this technique in poetry. So let's focus over the figure of speech now. So first of all we do have personification here, that the poet used a non-living thing as a living thing in this poem. For example, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. It means जो rain है उसको हमने human attributes दिए हैं कि rain तो नहीं reply कर सकती है, but we have considered rain as a human being, so rain is replying. So here is personification, means rain has been personified
Number 2, metaphor. An indirect comparison between the qualities of different things. Means there is a comparison, but word of comparison is not used. So see, example is, I am the poem of earth. Rain is being compared to a poem here. Means हम बोल रहे हैं कि rain जो है वो poem of the earth है. We are not saying like the poem of the earth. अगर like या as होता तो यहाँ simile होता. Right? Now hyperbole. When we exaggerate something, so here we are saying bottomless sea. Means definitely bottom का कहीं sea का कहीं ना कहीं तो bottom होगा ना. It cannot be like bottomless. But here we are exaggerating the depth of the ocean or sea. Now imagery. So here we do have visual description of something, and see there is a phrase soft falling shower. Right, in the beginning of the poem. So there is imagery. Means when we have the image in our mind that okay, this image we are getting in our mind कि हाँ जो उस phrase को पढ़ के हमें वो picturesque quality हमारे mind में आती है. So that is called imagery, visual description of something. An example is soft falling shower. So next is alliteration. We know that it is the repetition of the consonant sound in the beginning of the words which are placed together. For example, soft falling showers. So my dear students, there is a repetition of the S sound. So there is alliteration, figure of speech. Next is paradox. So my dear students, it is a statement that contradicts itself but still seems true somehow. For example, altogether changed and still the same. So listen, this line is a paradoxical line because it suggests the rain changes its form but still it remains essentially as highlighting the nature of the water cycle. See my dear students, यहाँ पर क्या है कि altogether change and yet the same. Poet is saying कि जो water का form है, पहले water होता है, then water vapor, then cloud cluster, then again water, then it's getting mingled into the soil. So जो water का form है that is getting change, but जो उसका we can say जो essentially है, जो nature है, that is not changing. So there is paradox, means it is changing but somehow it seems that it is the same. Now next is oxymoron. So it is the use of two seemingly contradictory or opposite ideas or words, and it is used to create a certain poetic or rhetoric effect. Listen my dear students, oxymoron में क्या होता है? Opposite words are placed together or ideas are placed together. For example, day and night, ragged and unragged. So my dear students, I hope this is clear to all of you. If you have any doubt, you may go through the video once more. And now you are supposed to answer some of the very short questions here in the comment section so that you may have an idea that how much do you know about the poem. And until the next video, keep learning and be safe. Thank you.